Am I audible there? So once again, a very hearty welcome to each and everyone present over here, and good evening. Today, indeed, it's a very, very special day, and we thank God for this day. Before we begin, I really appreciate the presence of our guest in our midst, और हम बहुत खुश हैं कि हमारे बीच में वाइस चांसलर मिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर पांडे उपस्थित हैं. So we welcome you, and to give a floral welcome, I request Mr. Sandeep Joy, trustee and senior faculty, Builder Nursing College, to please give him a floral welcome. Let's give a huge round of applause. Thank you, sir. And we are also very happy. We are glad to have Mr. WIlfred in our midst, and he's always there with us. So thank you for being in our midst. And to welcome Dr. WIlfred, I would like to request Mr. Rishi Nath, trustee and co-founder Tech Herald, to welcome Dr. WIlfred. Let's give a huge round of applause. So we welcome you and thank you for giving us your valuable time. और आप सबों का भी समय पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस स्थान पर बहुत अच्छा स्वागत एक बार फिर से. और इस सभा की शुरुआत हम करेंगे और हम सुनना चाहेंगे जो हमारे हार्ट बीट फाउंडेशन की चेयरपर्सन है मिस्टर आलोक बेंजामिन, एंड ही नीड्स एक्चुअली नो इंट्रोडक्शन बिकॉज हिज एक्शंस स्पीक. तो मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर आलोक बेंजामिन कि वो आगे आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें. आइए हम तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे. सर. Thank you so much. Basically, I'll just take 2-3 minutes to tell you like what this program is all about, so that you'll get some idea of what we are trying to do with this employability program. So it's a what we did during the past 3 months, and the idea was to make the younger generation employable with certain skills. Because I used to keep getting calls that I need job, but when I used to ask them what they have, do they know any skills, do they have skills, then most of them would say they don't even know computers. Even those who have done PGDCAs, they didn't know what PPT means, and they've never made PowerPoint presentations. So keeping that in mind, we thought we should start something to make them more employable, and we decided to have this as is it on? Yeah, just go to the second slide. Yeah. So we made this poster basically for social media. So this is our second batch certification ceremony. So we just said that this is going to be free. Everything that we want to do is free. So we made a high school as the primary requirement for that. Also, that the one needs to be economically from a weaker section of the society. And then we promised them that we're going to teach them computer and Hindi English typing, spoken English, and personality grooming. We also took 500 rupees as refundable fees, because with our first batch experience, the people would leave in between and vacating the seat for no reason. So we just made it mandatory for them to be able to have that. And then we also we did it because yeah, yeah, please come on. Please take your seat. Please be seated. Please be seated. Welcome. So I was just giving them the presentation. So about what this course is all about. So we started on time because our guests were like, it's a small program, very few people. So what we did was we tried to make them employable. This program is all about that. Plus, with the help of, because things people may get it for free, but it is never free because somebody has to pay it. So we we brought out this poster where people can sponsor each student for 3,000 rupees for 3 months course, and thankfully we got enough sponsors to sponsor them. Welcome. And okay, go ahead. So this is where the we are teaching computer very quickly. To save cost cutting, things, I teach English, and then these are they learned to do the PPT and give presentation themselves, which was something really good.
Then we had Saturday specials where we invited people. This is, I always wanted to do it when we started aftercare, but thankfully it was made possible through this program, where on Saturdays we had some personality to come in and share from their life experience or any topic that they feel that they are confident teaching others. So we had, just, I want to take the names. This is Mr. Prabhat Kumar, Deputy Superintendent of Central Jail. He came and shared. Then this is, I don't know who, Dr. Wilfred with his violin. Then he spoke a lot of things from his experience. Then we also, oh, and on Saturdays we made it mandatory for the students to, clean the place where they learn things. So they used to clean the premises every Saturday. And I don't have enough pictures. This was actually I took today by like CCTV footage. So since I didn't have any pics of that, okay. Then we also ask them if they are preparing for any exams, entrance, if they need books. So some of them name different books of entrance exams, or even personality grooming books, or even biographies. So whatever they listed, we made a poster of it. We went to the public, and within like a day, people sponsored. What we did was we put the name of the book and how much it cost in Amazon or whatever this thing. So people just said, okay, I'm going to sponsor Rich Dad Poor Dad, or I'm going to sponsor this, and within 24 hours people gave. So we got this, and then they are using it. Yeah, then go ahead. This is Akashvani. We could only have one trip, and to Akashvani, Tulika ma'am is here, and courtesy her, we could go, and children could have an experience of recording actually their own poem and thoughts. Yeah, this is again Akashvani. Yeah, then again exams. Every Saturday we used to have exam. Whatever they learned, like for the last 5 days, we would ask them to go through the exam of typing and English and computer. So they would give written exams, and we'll put it in their files so that they'll know how much progress they are making. This is Naraini ma'am. She couldn't make it today, but she taught on communication skills one of the Saturdays. Uh, Dr. Shaleen Sharma, he spoke on gender equality with our children. Yeah. And then Beulah ma'am, she spoke about excellence, particularly in studies and otherwise. But it was online that time, so she was on this television set. Yeah. Uh, Mr. Hemant Nigam, he spoke on short break. Yeah. Happiness, a step towards happiness. Then Adya, she spoke on various things. I didn't give her topic, particular. Then Captain Mosri, she taught children about group discussion, so that was good. And Gaurav Dikshit, he's a chartered accountant, so he just took about employability and how you can choose various careers and other stuff. It was also very nice. Then we got this opportunity to cook together. In fact, they cooked. I just helped them with the dessert, and so we had a fun time there. Then, yeah, then this you can see the clip. Does it work? On Saturdays, one of the clips that, yeah. Oh, this is upside down anyway. Okay, so this is Saturdays were like test and fun time. And particularly I used to encourage them to do what they think they cannot do. Like if they say they're not good at dance, I said, why don't you just do it and try it out? And they figured out, like, some of them, they thought they are not good at dance, but they were good at dance, or some were actually horrible, of course, but they tried everything. So that's something good, like getting that confidence to do it. Yeah. So is there anything else? Yeah, you can go to the next slide. That's it. Okay, so this is in short what we did, but I'm not going to share much. Now you will hear soon from the students as they're going to take few seconds to tell their story. Yeah, so I would like to hand it over back to Archana ma'am. Thank you very much, sir. Let's give a huge round of applause to the chairperson, Hadvi.
वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और जब मैं देख रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि ये कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों को ये अवसर मिला है सभी बच्चों को कि इतने जो एक्सपीरियंस्ड जो व्यक्ति हैं वो आपके समक्ष में आए और उन्होंने अपने अनुभव को बताया और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको सीखा, जो कुछ भी आपने सीखा है उसे हमेशा उसको बनाए रखें, उसमें आगे बढ़े और जिनके पास नहीं उस तक भी इस बात को पहुंचाएं। And we are very happy to have few more guests in our midst. We have Dr. Shaleen Sharma ji in our midst, and to welcome Dr. Shaleen ji, I request Mr. Sanjay, who is a direct self consultant in LIC, to welcome with floral greeting. We are very happy to have मैम तुलिका जी in our midst. बहुत अच्छा लगा उस वीडियो को देख करके और हम बहुत खुश हैं और धन्यवाद भी देते हैं आपको अवसर के लिए कि हमारे बच्चे वहां पर गए और उन्होंने बहुत अच्छा आनंद, उनको बहुत अच्छा लगा उन्होंने, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड टू वेलकम हर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर ऋषि नाथ टू प्लीज वेलकम। He's a trustee and co-founder Technical, to please welcome मैम तुलिका, प्लीज कम। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। Thank you so much, ma'am, for your presence, for giving us the time. हमारे बीच में मैम उषा गर्ग जी हैं, आपका भी बहुत आय से स्वागत है और मैं निवेदन करती हूँ मिस्टर संदीप जॉय से कि वो उनका स्वागत करें इस पुष्प के द्वारा। मैम प्लीज आगे आए। मैम उषा जी, थैंक यू सो मच मैम। और अभी हमने प्रेजेंटेशन देखा, हमें देख के अच्छा लगा और हमारे बच्चे हैं वो जरूर बताना चाहेंगे उनके अनुभव के बारे में, उन्होंने क्या सीखा, ये जो भी बात है जो आप कहना चाहेंगे तो मैं एक एक करके आपको बुलाऊंगी, आप आगे आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। सो आई लाइक टू कॉल वन बाय वन। सो आई नाउ इनवाइट अंकेश बघेल। तालियों के साथ अंकेश का स्वागत करेंगे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंकेश बघेल है। पिछले तीन महीने पहले मैंने नेशनल रोजगार में कोर्स ज्वाइन किया था और इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश एंड टाइपिंग हिंदी इंग्लिश, और व्यक्तिगत विकास के बारे में भी मुझे बहुत जानकारी मिली है। और हर शनिवार हमारे स्पेशल सैटरडे के लिए हमारे यहाँ पे नए नए व्यक्तिगत से रूबरू होने का मौका भी मिला है और उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। इसके लिए हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे झूठ नहीं बोलना, तो टाइम मैनेजमेंट और मतलब मैं गाली, पहले गांव में गाली तो लोग देते रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन पहले मैं भी गांव में था तो गाली देता था, लेकिन यहाँ पे आके मैंने गाली देना ही बंद कर दिया है। और झूठ बोलना, मतलब इतना पहले तो ज़्यादा ही बोलता था, लेकिन अब बहुत कम कर दिया है झूठ बोलना। और हर शनिवार के दिन ऐसे ऐसे कार्य किया जो मैंने पहले कभी नहीं किए, जैसे स्टोरी सुनाना, डांस करना। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और नए नए दोस्त बनाने का भी मौका मिला है। और इस कोर्स के लिए मैं आलोक सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और जो भी आपने अच्छा काम की, जो शुरुआत अपनी जिंदगी में आपने किया है उसको निरंतर आगे बढ़ाते चले जाएं। अब मैं बुलाना चाहूंगी बादल जाटव को। यस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज बादल जाटव। सबसे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ जो मैंने खास तैयार की है। खुशियों से भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ। खुशियों से भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आपकी घर में वही उपस्थिति पाकर आज यह कार्यक्रम खास हुआ। इसके बाद मैं बताना चाहूँ, सबसे पहले तो मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला अपने दोस्तों से कि ये कोर्स फ्री है, जो 3 महीने का कोर्स है। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे भाईचारा होता है, मिलकर काम करना। हर शनिवार को हम लोग इसका क्लीनिंग करते हैं और डिसिप्लिन भी है एक, जो हम अनुशासन में रहते हैं तो उससे हमारा सही जीवन गुजरता है। और एक और है कि ना,
हम जो यहाँ पर रहते हैं ना, तो इसमें एक चीज़ और है, सर ने जो हमें बताई है, वो है सबसे बड़ी टाइम की वैल्यू। क्योंकि समय बहुत कीमती है आज के जीवन। आप कुछ भी चीज़ को खरीद सकते हो, लेकिन समय को कभी खरीद नहीं सकते। सो ये टाइम की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर सीखी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी का। सबसे पहले हमारे आलोक सर, जिन्होंने आने का मुझे मौका मिला, उनके अंदर मुझे शिक्षा का मौका मिला। और उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हर शनिवार को गेस्ट के रूप में आते हैं। और आखिर में मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप इस प्रोग्राम में आए। धन्यवाद। थैंक यू, वेरी नाइस। अब मैं बुलाना चाहूंगी चंदन साहू को। तालियों के साथ स्वागत करें चंदन का। Hello, good evening, all of you. I'm happy that you all attend this our certification ceremony, and I am very happy to share my experience of this journey, because when I joined this coaching, I have little bit fear. So when I join, I make myself, and I make a courage to talk pupils in English. Yes, I can speak with pupils in English. I have no fear of speaking in English. That's courage I make it here by taking English classes. At here we learn computer, English, and typing also. And our both teachers give their all efforts to us. They teach us lots of things. Our computer teacher not only MS Office, even he teaches lots of things about computer, how computer works, how it come in access, who make this, and these all things he teaches. And our Alok sir is our English teacher and our personal development teacher also. So every day he take speech from us, and by giving speech to friends, we increase our spoken English. How can we spoke in front of lots of people? How can we change our grammar, increase how can we solve our mistakes? So I'm thankful to Heartbeat Foundation and Alok sir, and thankful to all sponsors who sponsor us for this program, and thank you for all of you. Very nice. He's from Belaua. Wonderful. Nice to hear you. Next, I'd like to call forth Jayant Kumar Sham. Let's clap for him, Jayant. Hello and good evening to all of you. I am learning so much within these 3 months, and our sir tell us so much things. And personality, many things change in my life, because when I visit in this coaching, sir said us, what you think people think about you is really happen, that people think about you and your activities. So this thing also affect my lifestyle. So that's can I will do lots of work that I want in front of public. And in computer I learn so much things, just like the names, what device we use, and also the making ppt and excel, and lots of things, just like what we call the task wall and cursor, this type many things we learn. And also in english, in starting there are lots of mistakes happen in my grammatically. So sir told us that you make a essay yourself and just give me. Then sir in all day every day, see he is always just check our spellings and grammatical mistakes and just tell us in the coaching class. So these all things have help me for speaking in english, and also help me for how to connect and talk with anyone in english. And in saturday programs lots of guests are come, and I remember the lady, she tell us about group discussion, because I am also practice, and I also want to defend service. And she tell us about the group discussion. So lots of things help us. And I know this all the things I learned from this, it's also helped me. So thank you all of you, and thank you sir. Wonderful, wonderful. Very nice. So next, I'd like to call forth Manoj Yadav. Let's clap for Manoj as he comes. Hello everyone, good evening to all of you.
मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ इस कोर्स को ज्वाइन करके, और इस कोर्स से मैंने जो भी सीखा है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वो सभी लोगों ने बताया कि हमने इस कोर्स से क्या-क्या सीखा, कंप्यूटर सीखा, स्पोकन इंग्लिश सीखी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ें सीखी। लेकिन मैं विशेषकर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने आलोक सर से क्या सीखा। मैंने इनकी 2 चीज़ें बहुत ही तरीके से नोटिस की, वो थी, फर्स्ट इज़ टाइम पंक्चुअलिटी, एंड सेकंड व्हाट ही डिड, व्हाट ही स्पोक। ही डिड व्हाट ही स्पोक। एंड मैंने टाइम पंक्चुअलिटी के को लेकर के एक एग्जांपल भी नोटिस किया। हमारे जो फर्स्ट कंप्यूटर टीचर थे, वो अपनी जो समय पर आने की निरंतरता थी, वो लेट आ रहे थे पर डे, तो सर ने उनको फायर कर दिया। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि जो अपनी हर चीज़ पूरी नहीं कर पाते हैं जो वो बोलते हैं, लेकिन सर ने वो सब कुछ किया जो उन्होंने हमसे बोला। सर ने हमसे बोला था कि वो हमको किताबें दिलाएँगे, सर ने हमको किताबें दिलाई। सर ने हमको तुलिका मैम के यहाँ पे, आकाशवाणी के यहाँ पे विज़िट कराया। और भी एक बहुत सारी चीज़ें जो सर ने हमसे कहीं, वो सर ने पूरी की। ये सब चीज़ें सीख कर हम बहुत ही आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हमने ये सब सीखा, और कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में इसको समाहित कर पाएँ। दैट्स थैंक यू। Wonderful. So touching. So now I'd like to call forth Minish Chaurasia. तालियां बजा के स्वागत करेंगे मिनीश। Hello, all of you, and good evening also. Myself, Minesh Chaurasia, and I say what I learned here. मैंने यहाँ पे सीखा कंप्यूटर के बारे में। यहाँ MS ऑफिस जो होता है, उसके अंदर जो एक्सेल होता है, और MS वर्ड होता है, और पावर पॉइंट होता है। यहाँ पे मैंने सीखा, यहाँ पर MS एक्सेल में डाटा एंट्री के बारे में, और मैंने यहाँ MS वर्ड के बारे में सीखा। यहाँ पर रिज्यूम बनाना, एप्लीकेशन लिखना, और PPT में सीखा कि कैसे अपनी PPT तैयार की जाती है। और यहाँ पे मैंने सैटरडे प्रोग्राम में PPT तैयार भी की थी, और भी दिन मैंने PPT तैयार की थी। जैसे सर ने टॉपिक दिया, सर ने बताया हमको, हमने टाइम दिया उसको और PPT तैयार की, तो हमने यहाँ पे PPT सीखी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी लोगों का जिन्होंने हमको स्पॉन्सर किया, एंड ऑल्सो आलोक सर, इन्होंने हमारी बहुत मदद की इंग्लिश सीखने में और बोलने में। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ओमकार सोनी आगे आएंगे। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। ओमकार। Good evening everyone, and now I want to tell you about my experience of this coaching. First I will tell you about before some time of that coaching. ऐसा था कि मैंने मोबाइल पे कुछ एक जॉब का देखा था, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। तो उसके बाद मेरे को फ़ोन आए कि आपको डाटा एंट्री के जॉब के लिए किया गया है, कि आप करना जानते हैं। तब मैंने पहली बार सुना कि डाटा एंट्री क्या होता है। तो उसके बाद मैंने किया कि नहीं, मैं ये नहीं जानता। उसके बाद मेरे को दोस्तों के द्वारा पता चला कि मतलब ये कोर्स हो रहा है, इसमें अपन कंप्यूटर के बारे में सीखेंगे। तो उसके बाद मैंने सर से बात की, तो सर ने बताया कि हाँ, मतलब ज्वाइन कर सकते हो तुम भी। तो यहाँ पे आया। उसके बाद मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि ये डाटा एंट्री MS एक्सेल में होती है। उसके मैंने ये भी जाना कि MS ऑफिस क्या होता है, MS वर्ड, पावर पॉइंट, एंड उसके अलावा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी सीखी मैंने। इससे पहले मैंने कभी टाइपिंग की भी नहीं थी, मैं जानता भी नहीं था कि मतलब टाइपिंग कैसे करते हैं कंप्यूटर पे। और ये जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि हाँ, कि मतलब कर सकता हूँ टाइपिंग, और मैं थोड़ा इसको आगे लिया तो अच्छा भी हुआ मेरा। उसके अलावा जो शनिवार को हमारे होता था, गेस्ट आते थे, हमको बताते थे, सिखाते थे कि आप जीवन में अपना ये कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो गेस्टों ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया कि आप जीवन में अपने अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद उससे पहले जो हमारा टेस्ट चलता था, उसमें टेस्ट में भी मैंने बहुत कुछ नया सीखा, जो कंप्यूटर चलाते वक्त नहीं सीख पाया, वो टेस्ट में सीखा कि ये कुछ हट के आया है टेस्ट में, तो ये भी सीखना चाहिए। हमारे कंप्यूटर टीचर ने हमको इसके कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताया कि CPU क्या होता है, ये कैबिनेट क्या होता है, कंप्यूटर क्या कैसे काम करता है, इसकी जनरेशन कैसे हुई है, कैसे आया। तो उसके बाद और सर ने जो हमको इंग्लिश में बताया, मैं इंग्लिश जानता था, इंग्लिश ग्रामर जानता था, बोलना जानता था, लेकिन कभी बोलने की कोशिश नहीं कर पाता था। तो क्या अंदर से थोड़ा एक फ़ियर रहता है, डर रहता है कि मतलब अगर अपन इंग्लिश बोलेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा कि ज़्यादा इंग्लिश झाड़ रहा है, या ऐसा होता है अधिकतर टाइम। और जब से मतलब सर ने बताया कि लोग क्या सोचते हैं ये मत सोचो, क्योंकि कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचता।
ये सर ने हमको बिल्कुल पहले ही दिन बताया था, तो तभी से थोड़ा थोड़ा कोशिश की हमने, और मतलब यहाँ आगे आगे आते हुए 3 महीने में इंग्लिश बोलना भी सीखा। तो मैं आज सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने ये 3 महीने में बहुत मदद की हमारी। थैंक यू सर। अब बुलाना चाहूंगी शिवम उमरैया को। तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे शिवम का। Hello everyone, good evening. Hello sir. First I want to tell you thank you all of you for coming here. And you all know that today is our last day of this batch, and today I am so happy because today we are getting certificates, and I also very sad because today is our last day of this batch. And here I learn many things, and Alok sir always wants to teach us many new things. Uh, and our computer teacher uh, al- teachers कंप्यूटर से कोर्स से अलग भी उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जो कि वो हमें बता सकते थे बचे हुए टाइम में। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया कि हम कैसे जॉब के लिए हम रेडी हो सकते हैं। एंड हम हर शनिवार को टेस्ट दिया करते थे, और हमारे लिए सर चीफ गेस्ट भी बुलाते थे, जैसे कि आज यहाँ आए हैं तुलिका मैम एंड सर। एंड सर आपके जेंडर इक्वालिटी को मैंने अपने उसमें उतारा, मैं घर पे अब थोड़ा काम भी करने लगा हूँ। और बेसिकली टुडे I see a message which give sent to sir, uh, जो मेरे स्पॉन्सर ने भेजा था, जिसे पढ़कर मैं बहुत अंदर से बहुत अजीब फीलिंग, सैड वाली फीलिंग आई, जिसको मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आप सभी को जिन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। और आप लोग को पता नहीं है, मैं स्टार्टिंग में मतलब कभी स्पीच नहीं दे पाता था, और इंग्लिश बोलने की कभी कोशिश ही नहीं की। पर यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की, जिससे मैं आज टुडे आई एम चेंज एंड दैट्स थैंक यू।